ये कंपनियां कौन है जो 30% से लेके 100% तक का ग्रोथ गाइडेंस दे रही हैं, इनमें से कौन सी कंपनीज जो है हमारे फिल्टर को पास नहीं कर पाई है। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने मैनेजमेंट के गाइडेंस सुने इस बार Q2 यानी H1 के कॉन कॉल्स में बहुत सारी मैनेजमेंट ने बहुत अग्रेसिव गाइडेंस दिया हुआ है। किसी मैनेजमेंट ने तो 100% तक ग्रोथ का गाइडेंस दिया है इन कमिंग 1 ईयर। बट क्या इन सारे गाइडेंस को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसी बेसिस पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? दोस्तों, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है और मेरा ये कहने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऐसी 20 कंपनीज को हमने एनालाइज किया जो 30% से ऊपर और अप टू 100% तक का ग्रोथ गाइड कर रही हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। आई वाज शॉक्ड टू नो कि उनमें से 12 कंपनियों को हम लोगों का फिल्टर बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहा है टू लुक एट इट एट अ सीरियस लेवल। सो हम लोग ऐसे ही कंपनीज के बारे में बात करेंगे कि ये कंपनियां कौन है जो 30% से लेके 100% तक का ग्रोथ गाइडेंस दे रही हैं। सबसे पहले तो इस यूनिवर्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, देन विल टॉक अबाउट कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने हमारा फिल्टर पास ऑन किया है। सो दिस वीडियो इज going to be really interesting for someone who is closely tracking the market, because market में तो काफी मिक्स रिएक्शंस हैं। अभी मैक्रो टेलविंड्स भी बहुत क्लियरली पॉजिटिव नहीं है, बट क्या इन मैनेजमेंट के बारे में हम सीरियसली सोच सकते हैं या नहीं, ये इस वीडियो के बाद आप तय कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं गाइडेंस आता कहां है। गाइडेंस दिया जाता है कॉन कॉल्स में, एनालिस्ट कॉल्स में। तो सबसे पहले कॉन कॉल क्या होते हैं? कॉन कॉल क्वार्टरली या हाफ एनुअली किए जाते हैं बाय मैनेजमेंट विथ इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट कम्युनिटी, और इसमें मोटा मोटी 3 चीजों पे बात होती है। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, और कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस क्या है। तो इसी ग्रोथ गाइडेंस की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। बट ये गाइडेंस के बारे में एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी मैनेजमेंट जब ग्रोथ गाइडेंस देता है तो ये कोई तरीके की गारंटी नहीं होती है कि मैनेजमेंट ने कह दिया तो होगा ही होगा, बिकॉज द प्रमोटर हिमसेल्फ इज डूइंग अ बिजनेस in a larger ecosystem, और वो ecosystem is a part of Indian economy and sometimes they are part of export economy as well. So उसमें बहुत सारी चीजें उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो मैनेजमेंट के गाइडेंस को बिल्कुल ब्रह्म सत्य मान लेना भी बिल्कुल ही नासमझी हो गई। हम लोगों ने सबसे पहले जो जिन 20 कंपनियों को एनालाइज किया उनके नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वैसी कंपनियां जो मोर देन 100% से ग्रोथ का गाइडेंस दे रही हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम। सेकंड कैटेगरी इज इक्वली इंटरेस्टिंग, जो 50% से ज्यादा ग्रोथ करने की बात कर रही हैं। You can have a look at these companies. And there is third category where the growth guidance is more than 30% in next 1 year. So एक इंटरेस्टिंग सेट ऑफ यूनिवर्स आइडिया जनरेशन के लिए आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनमें से किसी कंपनी को अगर हम ब्लाइंडली पिकअप करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एसजी मार्ट को पिकअप किया और उसमें हम कुछ चीज़ों को ध्यान से देखें, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह अगर हम उसको जज करने की कोशिश करें, देन वी फाउंड आउट मेनी डिफिशियंसीज। एसजी मार्ट में अगर हम बात करें तो एसजी मार्ट में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है 100% EBITDA ग्रोथ की, और दैट गाइडेंस इज फ्रॉम 100 करोड़ ऑफ EBITDA टू 200 करोड़ इन FY26 एंड FY27 में 400 करोड़। तो 2 साल 100% यानी 2 साल डबल होने का गाइडेंस है। काफ़ी इंटरेस्टिंग गाइडेंस है। टॉप लाइन में हालांकि हम 6 महीने का नंबर देखें तो 5856 से ये नंबर घटा ही है, तो टॉप लाइन का गाइडेंस मैनेजमेंट में नहीं दिया है, बट उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 103 से 206 होनी चाहिए, बट 6 मंथ में अभी 123 हुई है। नेट प्रॉफिट भी 103 से 120 हुआ है। सो P&L में तो डायरेक्शनली इट इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन, बट नॉट स्ट्रांगली, वी कैन से द गाइडेंस इज स्लाइटली ओवरबोर्ड। But main problem is from cash flow from operation. We can see that 120 करोड़ या 200 करोड़ के प्रॉफिट की बात हो रही है, बट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज astonishingly नियर 400 करोड़ नेगेटिव। ये कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है बट वो अपने उसका कैश फ्लो में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। एंड दिस इज अ ट्रेडिंग कंपनी है, मार्केट प्लेस है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। उसमें अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सही नहीं होता है, देन फ्री कैश फ्लो कंपनी की जनरेट नहीं कर पाएगी। और प्रोमोटर स्टेक भी देखें तो कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। प्रोमोटर स्टेक हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 54% इन दिसंबर 2023 टू सितंबर 2025 में, इन लेस देन 2 years इट हैज़ ड्रॉप टू 36%, यानी लगभग 1/3 स्टेक जो है प्रोमोटर ने अपना कम कर लिया है। चिप्स आर ऑफ द ब्लॉक। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि
इस कंपनी को डीपली एनालाइज करने पे ही हम इस कंपनी की डेफिशिएंसीज के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि कॉन कॉल जनरली जब होता है तो मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश कमेंट्रीज देती हैं, और ऑब्वियसली कोई भी अपने बिजनेस को बुरा नहीं कहना चाहेगा। इमेजिन करिए एक इन्वायरमेंट जिसमें मैनेजमेंट, सीएफओ, हिज सीईओ, एवरीबॉडी इज टॉकिंग वेरी ग्रेट अबाउट द मैनेजमेंट, एंड सम एनालिस्ट जो उसको ट्रैक कर रहे हैं या इन्वेस्टर जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है उस शेयर में, वो जब मिलकर बात करेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब तो आनी ही आनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन कॉल की वाइब पॉजिटिव टर्न आउट होती है, बट हमारे पास एज ए इन्वेस्टर उसके अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, बिकॉज अनलेस वी सी द ट्रू पिक्चर वी शुड नॉट टेक एनी पोजिशन इन टू इट, एंड टू अंडरस्टैंड द ट्रू पिक्चर वी शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल्स। और इसी चीज को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने साधन कवच डेवलप किया है, जिसमें हम मोटा मोटी 4 चीजों पे फोकस करते हैं। सो आवर फ्रेमवर्क ऑफ साधन कवच, ये बेसिकली एक सुरक्षा कवच है। इट्स अ अर्ली आइडेंटिफिकेशन फ्रेमवर्क वेयर वी कैन फिगर आउट अ कंपनी विच कैन पोटेंशियली बी ग्रेट विदाउट गिविंग गाइडेंस, बिकॉज वी हैव बीन एबल टू पिक अप कंपनी जो कि कॉन कॉल्स भी नहीं करती हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां, हिस्टोरिकली भी जाएं तो सिल्चर टेक्नोलॉजी ने अभी कॉन कॉल करना शुरू किया है, बट आवर साधन फ्रेमवर्क हैज हेल्प्ड अस फाइंड सच कंपनीज क्वाइट अर्ली, including Shivalik Bimetal. There are so many, n number of examples are there. There are 100 ratio possible, but we picked up 30 plus qualitative filters and ratios which help us find out कि किस कंपनी में क्या रेड फ्लैग हैं, कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज है या नहीं है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मोड स्कोर्स एंड कैश फ्लो बेस्ड पैरामीटर्स विच हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो हम सिर्फ पीएनएल नहीं देखते बल्कि ज़्यादा फोकस करते हैं बैलेंस शीट पे और कैश फ्लोज पे। इट हेल्प्स अस प्रोटेक्ट फ्रॉम हाइप, हेल्प अस फ्रॉम मिसलीडिंग गाइडेंस को अवॉइड करने में हमें हेल्प करती है, और शॉर्ट टर्म ऑप्टिमिज्म जो मार्केट में चल रहा है उसे हम डिस्कार्ड कर यूजिंग साधन कवच, एंड वी ट्राई टू लुक फॉर ओनली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज विच आर मेंट फॉर medium to long term investment. So we developed this tool and we teach this tool under Sadhan mentorship program, which will be live in December 21st. And this is a live program. बहुत सारे recorded program आपने सुना होगा, but in this program I come live every Saturday or Sunday. It is meant for professionals who really want to excel as an investor, and this is a slightly advanced level program where I share my investment framework as well as I share Indian case studies जो कि हेल्प करती हैं टू यू टू डेवलप अ मेंटल मॉडल और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क लाइक फिलिप फिशर और चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट, एंड अ मेंटी गेट्स अ कम्युनिटी Q&A and support from me, and he can directly ask me questions. So if somebody wants to really excel in the field of investment and wants to catch the fishes by themselves, so this is the live mentorship course which I think one should really pay attention to. Good news is that if you join before December 10th, you will get a early bird discount. So do check out the link in the descriptions. So Sadhan Kavach basically certify करता है कि this company is fundamentally strong. Only the fundamentally strong companies can make through our criterias, and that's why we run it through these 22 कंपनीज। सो हम लोगों ने इसी चीज को पैरामीटराइज किया है इस वीडियो में, और आपके सामने ये रिजल्ट है। सो व्हेन वी एनालाइज दीज 22 कंपनीज, व्हाट वी फाउंड आउट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स टॉक अबाउट केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसमें गाइडेंस जो है वो 60% ग्रोथ का है इन सेल्स। ऑल्सो द मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 50 बेसिस पॉइंट। 2700 करोड़ की टॉप लाइन है, इसमें 60% मेक्स इट मोर देन 4000 करोड़ expected sales from FY26. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 16%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% हो गया है, 15 to 16, सो मार्ज गाइडेंस की तरफ मूवमेंट दिख रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 293 करोड़ से बढ़ करके 379 करोड़ हो गया। TTM में नंबर्स वाइज दिस कंपनी हैज़ बीन डूइंग वेल, बट हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं तो वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हैज़ बिकम नेगेटिव। एंड अगेन ये भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप EMS का बिजनेस कर रहे हैं और उसमें वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव टर्न हुआ है फॉर द सेकेंड टाइम इन लास्ट 4 years, which means that the bargaining power and the control over the finer cash flow is not there. So that's why the story जो है वो उतनी strong नज़र नहीं आ रही है। वहीं प्रोमोटर के स्टेक भी डाइल्यूट हुए हैं in last 2 quarters. The shocking results came when we applied Sadhan Kavach on these 22 businesses.
12 out of 22 failed. More than 50% companies got rejected. The key reasons were the cash flows were weak, the growth was not sustainable, return on capital employed was poor, leverage was not comfortable, management was questionable. So we also use ROIC shift to remove companies which are not moving in the right direction, and we try to avoid companies which doesn't have the proper degree of operating leverage. अब हम बात कर लेते हैं ऐसी कंपनियां जो हमारे साधन कवच से अप्रूव्ड हुई हैं, जिन्होंने ये इनमें जो फिल्टर्स हैं, मोर देन 30 प्लस फिल्टर्स हैं, उनको पास किया है. लार्जली सेइंग 30 आउट ऑफ 30 तो रेयर ही होता है कि सब क्लियर कर पाए, but even 20 out of 30 is a good score. There's a company called Waaree Energy, which is a solar company. Their sales has been growing from 2000 crore in March 2020 to 14,500 crore in March 2025. So the sales and operating profit has been growing in line. Operating profit has also become more than 27 times, but a lot of it has come from other income. That is also to be noticed. So we kind of look at the overall operating parameters, but net profit wise also this company has been doing well, and this company has given a 80 to 90% growth in EBITDA guidance. They are targeting a range of 5,500 crore to 6,000 crores in EBITDA. H1 top line has been already up by 51%, and EBITDA is up by 118%. So this guidance is into EBITDA, and they have kind of stick to the guidance in terms of EBITDA expansion, and the cash flow from operation is healthy. So it has came out quite well in Sadhan filter, and promoters stake has not been diluted. So those are the things which are really important, and we figured out certain other parameters which we think is meaningful, like cumulative cash flow from operation compared with PAT is good, operating leverage is there, promoter stake is more than 50%, and mode score, which we developed ourselves using Warren Buffett framework, is scoring quite okay. ROIC shift my direction is quite well, because you can see on the right hand side, so the desired shift is there year on year. HBL Engineering, the second company, the top line has grown by 54% for this fiscal year. H1 top line is up by 76%, EBITDA is up by 230%, and PAT has grown 317% in H1 itself. In long term, they have given a guidance of 4,500 crore top line by FY30. If you look at their sales, it has been growing decently, except in 2025, it has slightly sank from 2,233 to less than 2,000 crore. Operating profit margin has jumped in last 6 months to 33%. But this is a one of a kind. The operating margin is not going to sustain. Net profit has, as a result, grown to 640 crores. So the company is doing everything quite well. Even cash flow from operation has grown to 239 crores, which is decent. The promoter stake is intact. So these things are quite okay in our assessment, and also all the parameters are being ticked. That's why we are saying that this is a fundamentally strong company, and the ROIC shift is very well. Here is the output of companies who have given 100 plus growth guidance. One was KRN Heat Exchanger, other one was SG Mart, Waaree, Websol, Fcom, ASM Technologies and Creative Graphics. इनमें से कौन सी कंपनीज जो है हमारे फिल्टर को पास नहीं कर पाई है? KRN has not passed, SG Mart already know, Websol and Creative Graphics could not pass our filters. But balance 3 companies including ASM Technologies, Fcom Holdings and Waaree has cleared the fundamental analysis filter made by us. If we take the case of 50 to 100% growth guidance, then we have so many companies in front of you. Companies which failed was Danis Power, Kaynes Technology, Jet Tech, Timex Group एंड श्री रेफ्रिजरेशन. वहीं जो कंपनियां जिन्होंने इसे पास किया है वो है फ्रंटियर स्प्रिंग्स, विलास ट्रांसकोर, HBL वी ऑलरेडी स्पोकन, V2 रिटेल एंड मोनोलिथ्स India Limited. So these companies has passed the Sadhan Kavach filter. In 30 to 50% growth bracket, the list is long, but none of them has actually passed this Sadhan Kavach. But this is clearly an output which is there for us to really take it forward or not, because these are not stock recommendation, these are not buy or sell recommendation. This is a financial analysis metrics which we used when we look at companies, when we try to remove all the hype from the truth. So this is the first cut. So now after out of 22, around 10 are left with us. So then we can do the business analysis, and
That's how we move forward in our investing journey. And in Sadhan mentorship, we basically teach this is the first step. और ये सब करने के लिए साधन कवच just take less than 5 minutes because साधन कवच is integrated Excel with Screener.in. So all the output you will get in less than 2 minutes if you understand it quite well. And then you can use these frameworks to assess the companies on important 30 parameters which are really meaningful for you to grow as an investor. This video is for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any investment decision. We have discussed 4 companies, 2 okay and 2 not so okay as per our filter. And if you want we do a follow up, then please comment follow up in the comment, or you can type Sadhan Kavach also. So we'll see if your interest comes on this topic, then we will do a follow up on these balance names where we'll go a little more details. So do let me know in the comment ये वीडियो आपको कैसा लगा, and keep sharing our work with your friends. Thank you for being a patient audience. Thank you.